Hello friends, welcome back to another episode of Uncovering India. It is generally believed that extreme adversity either brings out the best or the worst out of us. And we have two youngsters with us, Sumera Khan and Saish Salkar from Curtorim and Curtorim areas of Goa respectively, who have only shown their best out of the adversities of double whammy of 100% visually impairedness and COVID combined. They have come up triumphs in their exam and scored 90% and 85% in their SYBA exams respectively. And we are here to celebrate their success story today and show to the world that nothing is impossible if you have decided to make it big. Hi everyone. I welcome you to residence of Sumera Khan, who is the daughter of a scrap dealer, lives in Curtorim area of South Goa, and let's have an interaction with her today. Scarcity, consumption, use of goods and services for the satisfaction of human wants. Hello friends, we have now arrived at our wonderful young friend Sumera Khan's place. And here we have with us Sumera Khan, who is going to tell more about her life and her preparations and her fight against all odds. Thank you, Sumera, for giving us the time to come and speak to you. Congratulations for your success. How does it feel? Thank you, sir. It feels great to be to pass out with great marks. So, did you expect to score so much of marks? Did you expect to score 90%? Actually, I have been a consistent student, so it is very natural to get these marks. But yeah, this happiness is very great to me. Like, I feel very happy getting these marks. Yeah. So, how has been the reaction from your teachers, your friends, your parents? What do they say? For my family, looking at their faces, smiling faces, I feel it's a big achievement for me. And the teachers' smiles and all the blessings what I get from them is huge for me. Like, yeah. So tell me how this is what you have. You have the Braille script with you. So how have you been preparing for your studies? You have been studying from using Braille all throughout? No, actually, till my 10th standard, I have been using my Braille, and then since I reached my college, I was not using Braille since the notes were getting, we used to get the notes at the last moment, and it was not that easy to make the Braille notes at the last moment. Mm-hmm. So then my teachers started making the notes in audio format. Especially for you and Saish. Yeah, for me, my friend Saish, and the children who used to reach college. So as we used to get the notes at the last moment, it was not that easy to make this notes in Braille. So yeah, then I had to all depend on my audio notes. Okay. So how do you use your audio notes? Can you give us a demonstration? Can you show? Yeah, so I use my mobile and the earphones which I have. So I play it on the earphones and use it with the mobile and the earphones. But it is a bit tricky to use on the earphones and the mobiles because since audio notes, as you may be knowing, when sometimes we hear to notes and for stuff like if it is a music or something like that, you feel relaxing or something. But if you tend to listen to notes on audio, you might tend to sleep sometimes. So in case of me, if I feel Braille notes were quite very beneficial for me, as
I used to be very alert and used to read it. But now audio notes, as it is, there is no other option. I have to go with the changes and accept it. But yeah. And so can you just play something for us on your mobile? Any lesson that you can play, small note you can play for us? Sure. So it must, despite all these difficulties, you have still coped with the changing times. You have still done it. You have still made it, and you have scored 90%. That means that you have adapted well to the changing scenario. Yes. So you said that you have been a consistent student throughout. So consistently you have been doing well. How have you been studying? What has been your study preparation schedule like? How do you do your studies? Actually, there is no a schedule as such, but if you be very, means like you be keen on studying, I feel like you should be determined to do something. You should be very, you should fix a goal in life. You should be like you have a set of goal in life, then I will do it. Then no one will stop you from doing it. For example, if I set a goal that I will study and I will do something in life, then you don't need a schedule as such. Okay. So in my case, I had no schedule as such. Like time comes and I study. Yeah. So apart from studies, what you do? I'm told you are into a lot of dramatics also, debating and extracurricular activity. So how do you divide your time between your studies and extracurricular activities that you do? Yeah, so I feel in this generation, studies is not only the option. So we should be all-rounders, and yeah, even I feel as a visually impaired, we should not only restrict to studies. So I am involved in various of activities, like I am involved in Toastmasters, which is a platform which allows us to speak on the spot speaking or such. So I am involved in that, and in this lockdown also I have not kept myself idle as such. I have also enrolled myself in various activities which is organized by the Samarthanam Trust for the Disabled, which provide us an online preparation for interviews and good communication skills in English and so on, many other things. So to show us, which I can show, like I am also a good sports person as well. Wow. So I have a bit gained some medals and all. Wonderful. What sport do you play? I'm good at chess, playing chess. Oh, wow. Yeah, and even at running also. Okay. So yeah. Okay, great, wonderful, congratulations. Thank you. So, talking about COVID, how have you coped with the lockdown and your exams and everything and your studies? Did it get hampered any way? How did you cope with it? Speaking about the COVID situation, recently, like we answered our internals, and when we answered our internals, it was not that tricky. But then, when we reached to the finals, we were not aware whether we will have our finals or not. But then our teachers contributed a lot, and they had a very positive atmosphere for us. They were teaching us online. Sometimes the online studies were a bit not so good for me, because there was no personal touch for it. So I used to feel bored, but then we have to accept the changes, and yeah, as I said, so yeah, I accepted it, and then I studied a lot, and yeah. So what do you want to do in the future? What are your future plans? My future plans, so to say, is I have big plans for future. I want to pursue my dreams in becoming an IAS officer, or I want to become something in official, in government jobs or something, I want to take up a government servant job. Okay, great. So you want to serve the country? Yeah, actually. Good, interesting. So what is your message to youngsters like you? There are thousands of youngsters like you who are also going through various difficult circumstances in their lives. What they can learn from you? What you can tell to them? Yeah, only message I can give to the youth or the society is that
that you should never think that your inability, like the disability what you have or the things what you can't do can obstruct your way. You should only think that it's your strength and you should go on with it. So, and you should always try your best to do that, and always think that your dreams are big and do it as in you should dream big and do it into your reality. And also you should see to in mind that you should never stop anywhere. Okay, another message I would like to give to the society, that if you ever come in across any visually impaired, never show your sense of sympathy. Instead, show empathy towards them, lend your helping hand, and okay, take care, stay home, stay safe. Thank you, Sumera, for your wonderful words and the wonderful words of encouragement and motivation. And now we have with us the parents of this wonderful young talent. नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। तो बताइए, आपको सुमेरा ने इतना अच्छा मार्क्स लाए, 90%, 90% स्कोर किया है, तो ये हमेशा से कंसिस्टेंट स्टूडेंट रही है। आप लोगों का कैसा अप्रोच रहा है सुमेरा के प्रति? वो तो हम बहुत अभी भी प्राउड फील करा है। अभी जब से उसका बर्थ हुआ है ना सर, तब से उसको प्रॉब्लम है आज का। अच्छा। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने हमको बताया नहीं कि उसको ये प्रॉब्लम है बोल के। जैसे जैसे बड़ी होने लगी ना, वैसा हमको पता चलने लगा कि ऐसा ऐसा उसके साथ में हो रहा है, आँख का थोड़ा डिफिकल्टी है बोल के। तो फिर हमने बहुत जगह दिखाया उसको, आयुर्वेदिक यहाँ पे वहाँ पे सब जगह दिखाया, जहाँ पे बेंगलुरु किधर केरला तक भी गए हम लोग, तो वहाँ तक भी दिखाया। तो भी इसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं, उसका जो है ना रेटिना पिगमेंटोसा का प्रॉब्लम है, और उसका इलाज तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब रेटिना का प्रॉब्लम है उसको, तो रेटिना को अगर कुछ करते हैं तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए उसको ऐसे ही उसको छोड़ना पड़ा। हमने तो कोशिश किया, फिर हमको किसी ने बेंगलुरु से हमको एड्रेस दिया NAB का, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड का। तो वहाँ से हमने एड्रेस लेने के बाद में हम कांटेक्ट किए NAB को। तो जब तक हमने 4th क्लास तक यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड में भाटेकर स्कूल में पढ़ाई किया, उसका भाटेकर स्कूल में पढ़ाई किया। फिर वो लीना मैडम से कांटेक्ट किया हमने, NAB की मैडम से। तो भाटेकर स्कूल वालों ने क्या बोला, 4th तक हम पढ़ा सकते हैं, इसके आगे हम नहीं पढ़ा सकते उनको, हमारे पास उनका ये नहीं है। तो लीना मैडम ने हमको बहुत हेल्प किया। उन्होंने बोला हम इसको पढ़ाएंगे, तो मगर नहीं पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे इसको। तो लीना मैडम ने क्या किया, उसको NAB में एडमिशन करवाया। तो जब से 4th स्टैंडर्ड से जब से वहाँ पे गई ना, तो हमने बच्चे को छोड़ दिया पढ़ने के लिए। तो लीना मैडम के भरोसे हमने छोड़ दिया उसको। तो लीना मैडम उसको हैंडल करने लगी। लीना मैडम जो है ना, इनकी मैडम जो है ना बहुत अच्छी है, और उन्होंने 5th स्टैंडर्ड से उसको वहीं पे रखा, वहीं पे पढ़ाया। मतलब हमारे से ज्यादा उसको केयर लीना मैडम ने किया है। हम लोग भी उसको छोड़ा नहीं, हम लोग छुट्टियों में लाना सब सपोर्ट दिए। वो उसके लिए जितना भी स्कूलिंग है वो उधर से उनको अच्छे से हुआ। तो उसको पूरा एड्स तो लीना मैडम ने उसको इंस्पायर किया, उसका टैलेंट देख के, उसके बच्चे का ये देख के सब उसको ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दे के उसको पढ़ाया। तो वहाँ का स्टाफ, स्कूल बच्चे अराउंड 35 to 40 बच्चे इसके जैसे थे। तो उन्होंने वहाँ पे रख के उनको सांता क्रूज जो स्कूल है वहाँ पे उनको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया। वो लोग क्या बोलते हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो टोटली ब्लाइंड नहीं है, वो हमारे पार्शियली ब्लाइंड है, तो इनको ब्लाइंड स्कूल में नहीं डालना चाहिए, इनको रेगुलर स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो वो हिसाब से उनको ऐसा पढ़ाया उन्होंने। तो 10th हुआ। तो सुमेरा क्या परसेंटेज कितना है ब्लाइंडनेस का? उसका 5th, 6th, 7th, 8th तक उसका 80, 85, 92 ऐसा परसेंट। 25% विजन है उसको, विजन है, और टोटल ब्लाइंड कैटेगरी में जाती है उसका। और NAB का एक चीज अच्छी है कि वो बच्चों को डिसेबल बोल के नहीं रखते हैं, उनको नॉर्मली ट्रीट करते हैं। दूसरी जगह क्या होता है कि स्पेशल बोल के उनको ट्रीट करते हैं और उनकी पूरी लाइफ डार्क हो जाती है। जो NAB का ये है उनका सपोर्ट, जो NAB का भी ये कहना है कि हम गवर्नमेंट का सपोर्ट कुछ नहीं लेंगे, हमारे जो बच्चे हैं वो नॉर्मली ब्लाइंड है, वो टोटली ब्लाइंड नहीं है, इसलिए उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है। गवर्नमेंट से भी हमको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो उन लोगों का कहना ये है कि हम हमारे बच्चों को टोटली ब्लाइंड नहीं समझते, पार्शियली ब्लाइंड समझते हैं, और नॉर्मल बच्चों की जैसा पढ़ाते हैं उनको। तो उस हिसाब से उन्होंने 10th
क्लास तक सेंट्रल सांता क्रूज स्कूल में पढ़ाई किया उनका। फिर बाद में उसका 10th के बाद में कॉलेज को जाने का उसका प्रोग्राम हुआ। 10th तक तो उसका परसेंटेज अच्छा ही आता था, 85-90 का परसेंटेज था, पढ़ने में बहुत होशियार थे। और हमने भी उसको पढ़ने के लिए छोड़ दिया वहाँ पे, और हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 2 बार ऐसा मिल के आते थे, उसको कुछ देना करना सब करके आते थे। तो आज जब ये इतनी बड़ी हो गई है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में लॉकडाउन और कोरोना वायरस और ये सब प्रॉब्लम्स के बावजूद उसने 90% स्कोर किया, तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत जो है इतने सालों की रंग लाई है? नहीं, अभी और कुछ होना चाहिए। रंग तो लाई है, अभी जब तक उसकी पोजीशन नहीं होती तब तक तो हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। उसका तो पढ़ाई तो उसकी हमको मालूम है कि वो उसने जो मेहनत किया है उसके पीछे उसका फ्रेंड्स का भी हाथ है, उसके टीचर्स का भी हाथ है, बहुत लोगों का हाथ है उसके पीछे, और उसने और आगे बढ़ना चाहिए, किया है। अभी सांता क्रूज में हॉस्टल में रहती है वो, प्राउड तो फील और करते हैं। पढ़ाई करने को डेम्पे कॉलेज में जाती है। तो डेम्पे कॉलेज से वहां तक का बस का सफर होता है, उनको फैसिलिटी जाने का भी कुछ नहीं है, तो उनको ब्रेल का भी, ये भी स्टिक्स का भी उनको सिखाया उन्होंने, उनको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस करने का सिखाया, तो अपने से कुछ चलना चाहिए, करना चाहिए, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो उसके साथ में एक फ्रेंड भी है, हम लोग इंडिपेंडेंट ही छोड़ा उसको, जो उसी का जैसा ही है, जो थोड़ा बहुत दिखता है, तो उसके साथ में जाती है कॉलेज को, साइश। तो उस लड़के ने भी बहुत हेल्प किया उसको। और जो भी कंडक्टर रहते हैं, ड्राइवर्स रहते हैं, बच्ची का परफॉर्मेंस देख के लोग सब सपोर्ट किया उसको, जाने को आने को। फ्रेंड्स अभी मैंने तो मना कर दिया था कॉलेज को जाने को, क्यों, कैसा होएगा, वहाँ जाना है आना है, कैसा पढ़ सकेगी, वो दिखाई नहीं देता है। तो लीना मैडम ने क्या बोला, तुम हम पे छोड़ दो उसको, डरो मत। तो आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी। तो हम लोग फिर भगवान के ऊपर ये करके छोड़ दिया। अपने से पढ़ाई की है, रात के 2-2 बजे तक पढ़ने का करती थी उधर नैब में, और लीना मैडम भी उसको पढ़ाती थी। अभी ये जो कोरोना फैला है उसमें ऑनलाइन भी पढ़ाई करवाती है लीना मैडम, 24 घंटे उसको सुबह 8 बजे उठा के पढ़ने के लिए उसको बोलती है, और किसी तरह से उसको कोई ये नहीं किया कि भाई तुम किसी चीज में कम हो, हम लोगों ने पढ़ना चाहिए। और उसका भी इंटेंशन ये है कि मैं पढ़ूंगी, मैं कलेक्टर बनूंगी, मैं IAS ऑफिसर बनूंगी। तो जितना हम हमारे से जितना होता है हम तो कोशिश कर रहे हैं। हमने कभी उसको पीछे बैक नहीं किया कि भाई तू नहीं करना है ये सब, तो पढ़ना है तेरे को, मतलब वो अपने से पढ़ रहे हैं तो हम भी उसको पढ़ा रहे हैं। So friends, as you heard from this parents of this young talent Sumera, how parental support is very important in the progress of all of us, especially including the differently able children. And with the kind of support that we see here, it won't be surprising for us in the near future to see Sumera going on to do something very big with her life. That's Shashwat Gupta Ref with Anvesha Ghosh from Curtorim. धन्यवाद आप सबका, थैंक यू, एंड थैंक यू सुमेरा, एंड ऑल द बेस्ट।